देखो कैलोरीमेट्री में वन थिंग अंडरस्टैंड इज ये उसमें वाटर रहेगा एंड इसमें एक कॉपर का कंटेनर है। ये बाहर हीट नहीं आने देने के लिए आपको वुडन चैम्बर विल बी गिवन टू यू एंड हॉट ऑब्जेक्ट आई विल प्लेस इनसाइड द वाटर एंड slowly I will stir. So what is the thing we will understand from that? The object ka heat will be given taken by the water, right? So always we have to equate. What is the calorimetry principle says that heat lost by a hot body is equal to heat gained by the cold body. So we have to equate. And heat का formula मालूम है ना? mc delta t. Small c use करने में mc delta t, specific heat capacity. Okay. So this is the formula we have to use for the calorimetry. All questions we have to do based on that. Okay. Sometimes आपको specific heat capacity of the container also will be given. That means hot body कौन सा आएगा? आपको container भी रहेगा and पानी भी रहेगा hot water में. Sometimes hot water में I will added cold object. That time hot bodies, two bodies will be there. Okay. This is the thing. Now we'll go for the questions based on the calorimetry. Calorimetry base पे questions करने वाला है. चलो करो. So always in the question में starting में you can always take hot body and cold body separately and one two questions आपको ऐसे किया तो then directly कर सकते हैं. देखो 20 grams of water at 60 degrees Celsius is mixed with 60 grams of water at 20 degrees Celsius. So इसमें you have to understand which is hot body, which is cold body. Hot body and ये वाला cold body. हाँ इसमें 60 डिग्री सेल्सियस इज द हॉट बॉडी राइट. सो 20 grams of water and 60 degrees Celsius is a hot body and cold body is 60 grams of water and 20 degrees Celsius is a cold body. Okay. Now देखो when they mixed दोनों water only I mixed in one container. मिक्स करने से बाद उसके बाद उसका रिजल्टेंट टेम्परेचर विल चेंज राइट. वो कितना टेम्परेचर आस्किंग द रिजल्ट टेम्परेचर इज हाउ मच. द रिजल्टेंट टेम्परेचर मान लो इसका T है. Resultant temperature is T. Okay. Now apply the calorimetry principle. What is the calorimetry principle says? Heat lost by a hot body is equal to heat gained by a cold body. So use the mc delta T. Either be mc delta T. But don't cancel because this is masses Sir, are 30 different. degrees. Answer? Yes. Yeah, देखेंगे. So this is m2. Specific heat capacity दोनों water only same है. Cancel. Okay. Delta T should be always positive. Higher minus lower करने का always. Higher minus lower. आनो करो. Equate करो. So M is hot body का 20 in delta T. Delta T is higher minus lower. 60 minus T is equal to M2 is 60 into T minus 20, right? Higher minus lower. No equate and solve. That's 30 degrees. Yeah, 30 degrees. Always hot body, cold body का equate करके we can get the values. आया प्रणव? Next. चलो. हाँ, करो. The temperature of 600 grams of cold water rises by 15 degrees when 300 grams of hot water at 50 degrees Celsius is added to it. What is the initial temperature of cold water? Cold water का initial temperature नहीं दिया. So hot body and cold body. So cold body का 600 grams and temperature T मान लो. It rises by 15 degrees when mixed when 300 grams of hot water. 300 grams of hot water and 50 degrees Celsius is added. उसका क्या हुआ टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना हुआ राइजेस बाय 15 डिग्रीज देन कोल्ड वाटर मतलब द रिजल्टेंट मिक्सचर इज T plus 15. Now the initial temperature of the cold water is T is asking. use करो always hot body cold body equate करके solve करो. The options 5 10 15 20.
So how T plus. Wait, The sir. given Isn't the temperature only T plus 15? Isn't the temperature no, directly 15? the initial temperature of the cold water they Yeah, given, sir. right? Sir, isn't the delta, won't the direct T be 15? There T is 50 now. Yeah, I took direct T as 15. No, no, no. Oh. No, separate करो. Because the temperature of the 600 grams of cold water rises by 15 degrees when we added. When we added, it Sir, rises. 10. No, wrong. Apply करो. Heat lost by a hot body is equal to heat gained by a cold body. MC delta T. MC delta. Delta T should be always, huh? 5. Yes, 5 is also. That's MC fine. delta T. MC delta T. CC cancel करो. बड़ा मैंने छोटा करने का always. आया? Yeah. So next question. Sir, Hi Krisha. हाँ. sir, can you do the next step? MC delta T कितना है? Tell me. First one M is how much? 300. Sir, I don't know what to take T as. T only. T only we have to find. देखो, the initial temperature of the cold water I am trying to find. T लिया ना? T we have to find. Okay. Delta T is how much? Tell me. Delta T is how much? बड़ा minus छोटा. Which is बड़ा in this दोनों में से? 50. So 50 minus T minus 15. Right? बड़ा minus छोटा is equal to M is 600. इसमें कौन सा बड़ा है? This is बड़ा, this is बड़ा. T plus 15. T plus 15 minus T is how much? 15 only. So then we'll get Oh, find T. 15. Huh? So we'll get 15 as the answer. As the answer. No. 5 is the answer. Solve करो अच्छे से. Calculation So में can mistake you करते हैं? solve it? नहीं solve नहीं करेगा. Small kid solve करने के लिए. And 50 minus 15 is how much? Okay. कितना? Never mind. Sir, one Never minute. mind. 35 minus T is equal to 600 into 15. Sir, we'll get 3 to just 6. we'll get 5, sir. 30. But that only answer they're telling is equal to 30. So 5 is equal to T. आया? Also ठीक है. Next. चला करो. A vessel of copper of mass 0.21. देखो कॉपर का मास भी दिया अभी. कंटेनर का मास also given. Okay, contains 20 grams of water at 80 degrees Celsius. If 100 grams of water at 10 degrees Celsius is poured into it, find the final temperature of the mixture. So, एक कॉपर है, पानी है. कॉपर का मास how much they given? 20 grams. Sir, the 0. So just we need to equate the copper's heat to the water's heat. No, think करो. You want to do 0.21 kg का कॉपर ऑफ मास है. Contains 20 grams of water. इसमें क्या है? इसमें 20 grams of water is there at 80 degrees Celsius. Now tell me, इसमें now what is the hot body? And इसमें I'm adding 100 grams of water at 10 degrees Celsius. Now which is the hot body? Tell me. Hot body कौन सा है? प्रणव बोल सकते हो? Which is hot body in this? So the copper vessel and of- the water at 80 degrees. देखो बिकॉज आपको जब पानी डालेगा ना गर्म वाला दोनों सेम टेम्परेचर में रहेगा. सो कॉपर इज ऑल्सो हॉट बॉडी, वाटर इज ऑल्सो हॉट बॉडी. वॉट एवर वी एडिंग दैट इज नथिंग बट हियर कोल्ड बॉडी. देखो 10 डिग्री सेल्सियस ना कोल्ड बॉडी. तो इक्वेट करो. सो व्हेन द रिजल्टेंट मिक्सचर इज आस्किंग. सो हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी. हॉट बॉडी में आपको ये भी ऐड करना पड़ेगा. मतलब MC delta T plus MC delta T of the water is equal to MC delta T of the cold water.
So man, it's very important. Why? Because he will mention specific heat capacity of the copper also given. That's why we are taking. So we're looking at 30. देखेंगे. So 0.5 joules per gram or kg. नहीं, they given gram में, no problem. वो use करो. Because cancel हो जाएगा, no need of converting again. So yeah, I got 30. Yeah, 30 is answer. ये सबसे all values are set. पीछे आया उधर. इसमें डेल्टा टी इज हाउ मच यार फर्स्ट वन में कॉपर का तो 80 80 minus माइनस टी T. आएगा. वाटर का भी 80 माइनस टी आएगा. एंड इसका कोल्ड वाटर में टी माइनस T 10. minus 10. खत्म. यूज करो. ऑल वैल्यूज आर गिवन. थोड़ा पेशेंस से क्या था आ So जाएगा. do we आंसर इज 30. change 0.21 नो into नीड. grams? हाँ नो नीड. नो नीड. बिकॉज आपको ऑल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑल सेम यूनिट्स है ना. सो कैंसिल हो जाएगा. सो नो नीड Sir, ऑफ but don't कन्वर्टिंग. we have to change that? नो नीड ऑफ चेंजिंग. व्हाई? बिकॉज आपको चेंज किया तो भी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इफ यू आर चेंजिंग आल्सो इसमें भी सेम सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है ना. Not C, ऑल का sir. वैल्यू. हाँ. Sir, mass of a vessel. हाँ, मास ऑफ वेसल चेंज करना पड़ेगा. हाँ, इधर भी देखो. मास ऑफ वेसल आपको चेंज करने की भी जरूरत नहीं है एक्चुअली. भाई देखो इसमें ग्राम्स है, ये भी ग्राम्स है ना. Sir, कॉपर it's का kg, ओके. sir. हाँ या केजी से ना कन्वर्ट करना पड़ेगा. एक यूनिट्स में कन्वर्ट कर लो. Sir, 1 second. या करो. Sir, I think I did a calculation mistake. Sir, I'm getting 57 point something. नहीं नहीं, क्या मिस्टेक क्या होगा. सो एक बार स्टेप लिख लो, हो जाएगा. सो दैट आंसर इज 30 रुपीज. नेक्स्ट. ठीक है, आंसर बाद में ट्राई करो. नेक्स्ट. हाँ करो. जेई मेंस क्वेश्चन करो. They can combine now with this anything they can combine this specific में. A Victoria height of Victoria Falls is 63 meters है पूरा falling वाला. What is the difference in temperature of the water at the top and bottom of the fall? Delta T is asking. Given 1 calorie is much and specific capacity of water also given to you. Use करो. चलो answer. So 150. I'll give options. चलो. 0.147.
जेई मेंस क्वेश्चन है 2021 का, करो। Sir, when we so do we need to convert calories? Because Definitely, yeah. so 4.2 joules. So there's no option of one. No option है, 4 options यही है. sir, I got 0.15. That is 0.147 because I took GS 10. Okay, देखेंगे. We'll see. क्वेश्चन understood क्वेश्चन. हाइट ऑफ उसके पास देखो, अभी देखो दे आर कंबाइनिंग विद द ऑल वर्क फॉर एनर्जी हो सकते हैं, और स्प्रिंग के साथ दे कैन कंबाइन, एनीथिंग दे कैन कंबाइन. आपको दिस वन देखो, ये हाइट फॉल हो रहे हैं, फॉल होने से हमें विच एनर्जी इज कन्वर्टिंग, टेल मी विच एनर्जी इज कन्वर्टिंग. ऊपर है, ऊपर विच एनर्जी इज देयर, पानी, वाटर हैज विच हैज Potential energy. potential energy. After that it will converted to kinetic energy. गिरने के बाद क्या होगा, it will converted to heat energy, right? MC delta T, converted into MC delta T. So that's why directly you can equate total energy mgh is equal to MC delta T, and delta T find करो. So what about mgh, kinetic energy? total energy is constant, right? It's converting from one form to other form. He's asking change in temperature from top and bottom of the thing. So converting हो रहा है. So total energy equate कर रहा है, that's it. टॉप में इतना एनर्जी है, बॉटम में कितना एनर्जी है फाइनली आपको, mc डेल्टा टी, बिकॉज हीट फॉर्म में निकल जाएगा. नो डेल्टा टी फाइंड करो. Into 4.2, right? हाँ या वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू 4.2. So I'm getting 147. सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.47 और 0.147 और 14.76 एग्जैक्ट बोलो. because they given option such a way that exact calculation थोड़ा पॉइंट करना. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को joules में कन्वर्ट कर लो. 1 calorie is 4.2 joules. So there's So- no. So is it 4.2 joules per gram or joules per kg? सी ऑलवेज आपको joules पर kg देने की जरूरत नहीं है. दिल गिव ग्राम में दे तो ग्राम में यूज करने का, मतलब आपको इधर कन्वर्ट करो, मतलब जो भी है वैल्यूज. कितना हम लोग सोचेगा वो जोल से ना, एसआई यूनिट से ना ग्राम कैसा देगा बोल के, बट दे कैन गिव एनीथिंग वैल्यू, वो यूज करो, दैट्स इट. ग्राम पे. हाँ So that's what so you get delta T is equal to GH by C. देखो हाउ टू कन्वर्ट, टेल में केजी में कन्वर्ट कर लो, कितना आएगा केजी में कन्वर्ट कर लो. Why kg? बिकॉज आपको एसआई यूनिट्स का यूज करो, देखते हैं एसआई यूनिट्स, बिकॉज ही हैज गिवन डिग्रीज, ये सेल्सियस में दिया ना आपको. देखो व्हाट इज फॉर्मूला, टेल में mgh इज इक्वल टू mc डेल्टा टी. m कितना है, So MM cancel. आंसर हो जाएगा. हाँ g कितना है, टेकिंग 10 ले रहे, 10 ले लो. h कितना है, 63. हाँ. c कितना है, स्पेसिफिक कैपेसिटी 4,200. 4.2 joules 1 calories, ग्राम है ना, केजी में कन्वर्ट कर लो. So but why? सो दैट एसआई यूनिट्स में रहेगा. भाई हियर व्हाट यू यूज, हियर मीटर्स में यूज किया ना, सो इधर भी एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट कर लो, सो दैट आपको ऑल शुड बी इन एसआई यूनिट्स, राइट? एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट कर लो. अगर कुछ कैंसिल वाला कैंसिल हो गया तो नो नीड ऑफ कन्वर्टिंग, इधर मीटर से There's इधर अगेन नोट कन्वर्ट. 0.147. यस, परफेक्ट आंसर इज दिस वन इनटू डेल्टा टी. खत्म. डेल्टा टी फाइंड करो. सो 0.147 इज आंसर. आया
गिवन सेल्सियस में आ जाएगा। चलो, सो दैट्स वाई आपको थोड़ा चेक करो, कैंसिल हो गए तो नो नीड ऑफ कन्वर्टिंग, कैंसिल नहीं हो रहे तो ट्राई टू कन्वर्ट इनटू एसआई यूनिट्स ऑलवेज। ओके, चलो नेक्स्ट करो। 2019 विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, सही से करो, डोंट सर्च इन गूगल और समथिंग। ए मासलेस स्प्रिंग, ओन में किया था, आपको भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, फिर देखिए तो क्या है, सब लोग बोलेगा। ए मासलेस स्प्रिंग K is equal to 800 न्यूटन पर मीटर अटैच विद ए मास। ओके, एक स्प्रिंग है अटैच विद ए मास है, M है, उसका 500 ग्राम्स और गिवन इज कंप्लीटली इमर्स इन 1 kg ऑफ वाटर। पानी में कंप्लीटली इमर्स हो गया 1 kg ऑफ वाटर। द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर, स्ट्रेच करके एंड रिलीज्ड, टिक 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 बोलेगा, सो इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग। व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब 10 पावर ऑफ चाहिए, ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर व्हेन द Well, half वाइब्रेशन k square, स्टॉप no कंप्लीटली। energy. हाँ The energy is half kx square, right? हाँ, हाफ के एक्स स्क्वायर। डेल्टा टी इज आस्किंग, ऑर्डर पूछ रहे, दैट्स इट। बल्कि ऑप्शंस Sir, so order of magnitude of change in temperature means just change in temperature. हाँ, डेल्टा टी इज आस्किंग। So the डेल्टा K टी is में Kelvin. आंसर आने के बाद 10 पावर ऑफ में जो आएगा वो बोलने का। So you'll get K is Kelvin only. हाँ, केल्विन ओनली। सो क्या हुआ, ये स्प्रिंग का ऐसे आने से क्या होगा, इट इज द स्प्रिंग एनर्जी, टोटल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू व्हाट, हीट ऑफ किसका किसका हीट है, वाटर का भी हीट है एंड ब्लॉक का भी हीट है, दोनों का हीट होगा। सो इक्वेट विद दैट, हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू mc delta t of the block plus mc delta t of water and find the value. So they can combine with anything in this way. Sir, can you move once? Yeah. Thank you, sir. So can I please use calculator? Sir, I need to do 0.16 divided by 4184. जेई में क्वेश्चन है, सिंसियरली करके आंसर बोलो, देखेंगे क्या राइट आना। Okay, wait. Sir, I'm a use strategy. So I got 10 power minus 5. 10 power minus 5. 10 पर ऑफ -5। हाँ, हम देखें और बोलने दो। Sir, will you get exact? 10 पर ऑफ कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं आएगा बट सम वैल्यू इनटू समथिंग, बिकॉज आपको साइंटिफिक मेथड यूज करके आंसर बोलने का। सो 10 पर -5 इज आंसर। Sir, what Okay, is that can you- value? they given as 3.6 into 10 पर -5 Kelvin.
ओके, सो दैट्स व्हाई द साइंटिफिक मेथड इज इंपॉर्टेंट. साइंटिफिक 3 पॉइंट है ना, तो वो करने का. नहीं तो क्या करेगा, 36 into 10⁻⁻⁴ भी लिख सकते हैं. दैट्स व्हाई दे कैन गार्ड. सो साइंटिफिक मेथड इज हेल्प यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, चलो है करो, मैं करो, देखते हैं. फिर बड़ा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चंस किया तो I think our sir made us do this question. यू डन ना. Sir, I remember it being 23 or 18 or something like that. Yeah, sir, we did this question. ये करेक्ट करो, विदाउट सिंग करो and tell the answer. Temperature of equal masses of 3 different liquids or x y z are given. Different temperatures है, मतलब 3 different liquids है, 10 degrees, 20 degrees and 30 degrees. The temperature of the x mixed with y, first case में x and y mix किया, the resultant temperature is 16 degrees बोल के बोला. And then y and z, the 26 degrees, then he's asking what is the x and z. कुछ नहीं, equation बनाओ. Heat lost by hot body is equal to heat gain by cold body लगा के So you solve get ratio between specific capacity of X, Y, and Z. yes. Because specific heat capacities are not given, right? So you can take specific heat capacity of Cx, Cy, Cz. ऐसे यूज करके रेशियो कुछ आएगा, यूज करके सॉल्व करो. एग्जैक्ट आंसर बोलो. So 23. I remember the answer. करने दो उनको करने दो. So 23.8. Yes, correct. 23.84. Speed up, the So I told 23.8 already. yeah. So two equations बन रहा है, MC delta T of x and y, then y and z का MC delta T, and then use that equations and x and z का भी MC delta T किया था, you will get the answer as 23.84 degrees Celsius. These all questions you have to practice nicely. Okay, चलो. And प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड क्वेश्चंस का. एंड नेक्स्ट वीक में पोर्शन दिया कुछ, नॉट दिस मंडे, नेक्स्ट मंडे. Sir, they told most probably full of like the whole chapter of thermal physics. ओके नाइस, हो जाएगा, कुछ नहीं. अच्छा आपको टेक्स्ट बुक कर रहे हैं कैसे भी, बट आपको मेटेरियल कर रहे हैं ना, सो आप उसके बाद PYQs आई विल अपलोड, पूरा PYQs भी कर लो, आइडिया आ जाएगा आपको. इससे सी if you're doing all models in that thing, PYQs will be easy that time. Okay, कुछ आया ना approximately 23.84. Yeah, चलो. वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए बॉडी, वाटर इक्विवेलेंट सुना होगा ना. व्हाट इज मीनिंग ऑफ वाटर इक्विवेलेंट, सुना है? Like for the same heat, how much water will be required? देखो, water equivalent of a given body is the mass of water
whose heat capacity is equal to the heat capacity of the given body. Okay, so water equivalent of the body will be given. Directly they will not give the specific heat capacities वगैरह ऐसा नहीं देगा. What they given? Water equivalent of a given body is एक body का water equivalent is nothing but इसका meaning क्या है? The mass of water, okay, whose heat capacity, एक water है, उसका heat capacity is equal to heat capacity of a given body. This is the water equivalent means. Suppose मान लो water equivalent of one body of A is 10 grams. मतलब मीनिंग क्या है? वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द बॉडी ए इज 10 grams मींस इसका मीनिंग क्या है? हीट कैपेसिटी ऑफ 10 grams ऑफ वाटर. सी ए का 10 grams बोल के देगा, देखो पानी का मतलब ग्राम से देगा ना. वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए इज 10 grams. उसका मीनिंग क्या है? हीट कैपेसिटी ऑफ 10 grams ऑफ वाटर इज इक्वल टू heat capacity of A. इसका मीनिंग है वाटर इक्विवेलेंट मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर इक्विवेलेंट मींस एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी का, दोनों को इक्वल हो जाएगा ऑलवेज. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज कैपिटल सी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम है ना, मास इनटू स्मॉल सी, राइट? मास ऑफ वाटर, specific capacity of water, and mass of body, specific capacity of the body. So they'll give simply they'll give one statement inside में, they'll give one statement water equivalent of A is 10 grams बोल के बोलेगा. मतलब उस उतना grams of पानी का heat capacity is exactly equal to heat capacity of the body. उसका meaning है. Okay, heat capacity is capital C. So question के तो समझेंगे, you understand? यार नहीं छोड़ा. चलो अब बेटा ना करो. वाटर इक्विवेलेंट ऑफ 400 grams of copper calorimeter I want. Water equivalent means try to find the mass of the water. वाटर इक्विवेलेंट ऑफ 400 grams of copper calorimeter, उसका वाटर इक्विवेलेंट कितना होगा? तो उसका मीनिंग क्या है? 400 grams कॉपर मतलब Four. उसका पानी का 40. हाँ Oh, 40. 40. yes 40 grams. Okay, because heat capacity equate करने के दोनों को. 400 grams water का heat capacity is exactly equal to the heat capacity of the body. Okay, That's 40, no? 40 grams, yes. क्या करो? A vessel contains 110 grams of water. Okay, एक vessel है, उसमें पानी कितना है? 110 grams है water. And heat capacity of the vessel also is equal to, देखो heat capacity of the vessel is equal to that of 10 grams of water. मतलब directly they given water equivalent. Heat capacity of the vessel is equal to 10 grams of water. Okay, the initial temperature of the water in the vessel is कितना? initial temperature है 10 degrees Celsius. Initial temperature is 10 degrees Celsius. And if the 220 grams of water I am adding 220 grams of water at 70 degrees Celsius. Find the final temperature of the vessel system. So final temperature कितना है? दोनों मिक्स करूंगा, फाइनल टेम्परेचर कितना? नॉर्मल प्रॉब्लम ओनली, मतलब टी फाइंड करेंगे, मतलब हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी. करो सब करो. And the given specific heat capacity of water is 1 calories per gram degree Celsius. So one ही रहने दो. Okay, no need of converting again. Okay. Grams है ना, because mass is also given gram Celsius, right? So no need of converting. So heat lost by a hot body is equal to heat gained by a cold body. Now cold body कौन सा है? देखो this is a cold body. Now कौन सा So cold the body mass of the hot water plus the vessel into the temperature will give is the equal to Okay. this one. Okay. करो.
कोल्ड बॉडी अभी ये भी है एंड कॉपर वेसल आल्सो इज देयर, राइट? So the दो vessel बॉडी you have to add for the hot body or cold body? Hot only, right? ओनली। यू टेल मी व्हाट इज द वेसल का टेम्परेचर? 70 degrees. हाँ, वेसल ये पानी डाला पहले, पानी डालने से इसका टेम्परेचर सेम हो But the जाएगा। initial temperature of the water in the vessel हाँ, is still. देन कोल्ड बॉडी का सब करने का। Sir, So I didn't heat understand. lost by hot body is equal I didn't to, understand. I didn't understand. see, I when didn't you understand that I pour, have to add the water ka mass. when you pour water to it, okay, initially कितना टेम्परेचर है पानी? 10. 10 degrees Celsius. The Yeah. same temperature will be there in the for vessel. Correct. Okay, so this is now comparison में tell me which is cold body, which is hot body. Yeah. Cold body is water here, and the copper is also cold body. So cold Okay. body में दो body ऐड करना पड़ेगा। Okay. So cold body ऐड करने समय हाँ MC delta T यूज करो। वेसल का MC delta T कैसे आएगा बोलो? So here MC delta T will be hot body का बोलो 70 minus T या T minus 70 या? It is 70 बड़ा minus छोटा, right? 70 minus T. Yeah. Okay, 70 minus T is equal to cold body का mass of water, specific capacity of water, and delta T is T minus 10 degrees Celsius plus now vessel का mass of vessel, specific capacity of vessel into T minus 10. So I want to get in some decimal value. वो आने दो, करो आराम से करो। आपके बोलो But I got in terms of like fraction form. Is that enough? डेसिमल कैलकुलेटर यूज करके डेसिमल फाइंड करो, टेल आंसर। नो हाउ व्हाट वी यूज कृष्णा, टेल मी mass of vessel and specific capacity of vessel. Specific capacity of vessel is not given, Say but 10 no. 10 into 1, right? The heat capacity of the vessel is equal to heat capacity of 10 grams of water, right? So directly 10 can't gram. we just Sir, add didn't the they mass just of give heat capacity of like they just gave water equivalent of vessel, so we can Yeah, so directly I- put Yeah, 10. 10. Yeah, 10. So Yeah. I just cancel the C directly. Huh? So I wrote mass of hot body into into delta T is equal to mass of the cold water plus mass of the vessel into C delta T. Yes. Yeah. No, solve करो। solve का आंसर बोलो। इन नंबर डेसिमल में आएगा, डेसिमल बोलो। Yeah, sir, I got once again. उसका मीनिंग क्या है? Specific heat capacity of the water is equal to specific heat I got capacity. 48.82. Approximately that only. कृष्ण कितना है? क्या करेक्ट कर रहा है? So 48 point something. Yes, correct. His answer 48.5 approximately. Okay. So आपको water equivalent instead of they'll give the 10 grams for example. आपको इधर लुक जाएगा, अरे सीवी नहीं दिया, सीवी दिया, क्या करेंगे, 10 ग्राम्स क्या करेंगे? वाटर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट यू अंडरस्टैंड। ओके, चलो नेक्स्ट वन इज हीटिंग कर्व्स का। हीटिंग कर्व्स में आपको दूसरा टर्मिनोलॉजी आएगा लेटेंट हीट का, उसका बेस पर क्वेश्चन आएगा। कैलोरीमेट्री में थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला, लेटेंट हीट में कंफ्यूज होगा पीपल, थोड़ा क्या करेंगे बोल के। चलो लेटेंट हीट मॉल फर्स्ट हीटिंग कर्व्स मालूम है ना आपको? आइस का मेजर कर 9th क्लास का, आइस का मैं हीट करता जाऊंगा, द टेम्परेचर गोस ऑन इंक्रीजिंग। बाद में क्या होगा? 0 डिग्री के बाद इफ आई स्टिल इंक्रीज करने तब भी द टेम्परेचर विल नॉट चेंज, टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। ओके, उसके बाद अगेन हीट करूंगा, पूरा पानी में कन्वर्ट करने के बाद दिस डायग्राम। ओके, इनिशियली मान लो इट इज -10 डिग्री सेल्सियस, आइस में हीट करता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया 0 डिग्री तक आने के बाद 0 से द टेम्परेचर इंक्रीज करना बंद हो गया,
टेम्परेचर इंक्रीज करना बंद हो गया, सो क्या होगा, दे ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर सर्टेन टाइम, आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद अगेन इट इज इंक्रीजिंग, आई गो ऑन हीटिंग ओनली, आइस को मैं हीट करता गया, हीट करता गया, हीट करता गया, पानी में कन्वर्ट होने के बाद अगेन इट इज स्टार्टिंग इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद अगेन आई ऑब्जर्व इंक्रीज नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, इट इज बिकमिंग कांस्टेंट, एंड बाद में इट इज इंक्रीजिंग. क्वेश्चन इज व्हाई इट इज कांस्टेंट हियर एंड हियर. 9th क्लास में पढ़ा ना, व्हाई इट इज कांस्टेंट, बिकॉज जो हीट एनर्जी दिया है दैट इज वेंट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, राइट, पढ़ा ना, उसमें निकल जाएगा. एंड दिस हिडन हीट को वी कॉल्ड एज लेटेंट हीट. ओके, एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दिस इज latent heat of vaporization. So when we are to use latent heat, when there is a phase change, when there is a phase change and temperature constant, phase change में temperature is always constant, at the time use the latent heat का concept use करना पड़ेगा. When the same phase में है and temperature is also changing, that time mc delta t use करना पड़ेगा, mc delta t. and latent heat का फॉर्मूला भी देखेंगे क्या है बोल के. अंशुड, राइट, डायग्राम ड्रॉ कर दिया अंशुड, चलो देखो लेटेंट हीट का, इट इज अ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय द सब्सटेंस ड्यूरिंग ए फेज चेंज. कंपल्सरी फेज चेंज टाइम में वी यूज लेटेंट हीट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर. फेज चेंज कभी भी होएगा विदाउट चेंज इन टेम्परेचर ऑलवेज. एट दैट टाइम में वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट. And latent heat, even though heat is supplied, temperature remains constant because all the heat is used to break or make the intermolecular bonds. So total heat energy जो दिया है वो पूरा break करने के लिए use हो जाएगा. That's why the temperature will not increase. ये latent heat का concept है. Yeah, so done. ओके, अब इसका डेफिनेशन देखेंगे. इसका लेटेंट हीट ऑफ शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, हो जाएगा. इसका फॉर्मूला भी रहेगा, उसका फॉर्मूला करना. चलो, टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट ऑलरेडी नो. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, heat required to convert 1 kg of solid to liquid at its melting point without temperature change is called as latent heat of fusion. And joules per kg, and ice is converted to water at that time में latent heat is nothing but hidden heat बोलते हैं, hidden heat, which we cannot see as in the form of temperature. This is called latent heat of fusion. Latent heat of fusion. फॉर्मूला शीट अभी तक जो भी है प्रिंट आउट ले लो, अच्छे से रखो. इट विल हेल्प यू अ लॉट व्हेन यू आर डूइंग द पीवाईक्यूज. सेकंड ईयर में अभी पीपल आर वी स्टार्टेड द पेपर्स, कंप्लीट पेपर्स, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का टेस्ट लिखता जा रहा है. सो उसमें मिस्टेक्स वी कैन लर्न ऑल पीवाईक्यूज, लाइक यू नो
नियरली होगा 5 to 6 years का पूरा करने वाला है। मतलब 1 year में so many क्वेश्चन पेपर्स आर देयर। Yes, done. सेम वे सेकंड वन, latent heat of vaporization. Heat required to convert 1 kg of liquid into vapor at boiling point without temperature change. Joules per kg. एंड इसका फॉर्मूला क्या आएगा? Q का फॉर्मूला क्या आएगा? हिडन हीट का फॉर्मूला ML. ml. वेरी गुड, सुपर। Yes, done. ओके, सो इसका फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला Q इक्वल टू ml, where heat absorbed or released, m is a mass of substance and L is a latent heat. It can be LF or LV. This is the formula we have to use. Q is equal to ml. एक कब यूज करने का? वेन एवर आपको फेज चेंज हो रहे विदाउट राइज इन टेम्परेचर, एट द टाइम डायरेक्टली वी हैव टू यूज ml, latent heat of fusion and latent heat of vaporization. तो क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे क्या करेंगे। लास्ट टॉपिक से ये हो गया तो खत्म। दिस संडे विल टेक टिल हियर पूरा चैप्टर्स, मतलब आपको टिल दिस लेटेंट हीट तक पूरा जो भी है आई विल टेक दिस चैप्टर का, पक्का प्रिपेयर कर लो। डन। क्यू को ml। नेक्स्ट, नाउ ये यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स एंड सॉल्व करेंगे क्यू को ml। So can you go backwards? Okay, sure. ओके, सो MC डेल्टा T आपको यूज करना पड़ेगा वेन एवर आपको फेज सेम फेज में टेम्परेचर राइज हो रहे तो, अगर फेज चेंज हो रहे तो यू हैव टू यूज ml। हाँ करो। 1 kg of ice is at -20 degrees Celsius. Initially ice है, is converted to 1 kg of water at 100 degrees Celsius. Same ice only. अब you go on heating, it converted to 1 kg of water at 100 degrees Celsius. Find the heat required to change the state of the substance. Find करो, देखते हैं कितना heat दिया तो it will change ice -20 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. So what is S of ice? S is 0.5. something but no, water का and ice का same. Okay. 1 calorie per gram degree Celsius. सो कन्वर्शन मालूम है ना आपको, आइस से पानी कैसा तक आएगा बोल के।
Sir, 100 kilocalories. क्या आंसर आ गया क्या? So, Yeah. so 200. Okay, you got 100, huh? Sir, I got 100 kilocalories. Okay. Oh, wait. Oh, two. What? इतना फर्स्ट में कृषा क्या किया? Tell me. Sir, I took from minus 20 to 0, 0 हाँ to like latent heat I took again separate, हाँ and then from 0 to 100. Sir, 1 calorie per gram into kilogram is into 1,000, right? हाँ इंटर तो करने का केजी में. So for ice, you have to take 0.5 now. मतलब जो दिया है वही 0.5, मतलब वो दिया तो वाटर का यूज करो, नो प्रॉब्लम. फिजिकल के पास. So wait, then one. So do we have to change kcal into No, no? kilocalories are given, right? No need of changing. Once 1 into 80, that's 8. कितना हीट्स है अभी तक कृषि? आपका टोटल हीट कितना है? 1 2 ओनली 3 Two. What? नहीं, टोटल हीट कितना है आया? Q1 Q2 200. Q3 में. 20, 80, 100. हाँ देखिए. Sir, 108. 108 देखिए. So if I given 108 joules of energy, if I given to the ice, it will convert it to 100 degrees Celsius, right? 108 kilocalories, sir. Yeah. Okay, देखें आपका. Now a doubt. Sir, first if I use MC delta T, हाँ and then mass separated as 1 only, right? हाँ या. So I did 1 into 1,000 into 20. हम्म. Then you get 20,000. Okay, Q1 छोड़ो. Next. And Q is equals to ml. Okay, ml का कौन सा है? It is converted to ice to water, right? Then Yeah, so 1 into 80. then water to 80. Then water to water at 100 degree. 100 degrees Celsius. So now So can MC answer. delta T if you use, you get 1 into 1,000 into 100. That Okay, is, the value answer final answer बोलो. sir, I got 120,080. I got 120.08. देखेंगे किसका right, I don't know. 190, yes, approximately. Sir, because they took 0.5. ओके, आइस का ले लिया. स्पेसिफिक केमिस्ट्री ऑफ आइस का ले लो, ठीक है. नहीं दे तो वाटर का यूज करना है तो बट आइस का ले लो. Yeah, basis is 100 only. यस. सो अप्रोक्सीमेटली 190 आएगा. 0.5 तो 190 आएगा. Oh, you get 200 if you take it as 1. हाँ. सो कृषि आपका राइट ओनली. सो आपको आइस तो आइस को ये स्टेप आपको मालूम पड़ने का आपको. ओके, इधर से इधर तक ml, इधर mc डेल्टा टी, इधर भी mc डेल्टा टी. सभी को मतलब इतना एनर्जी में किलो कैलोरीज दूंगा, देन इट विल कन्वर्टेड टू 100 डिग्री सेल्सियस में जाएगा. चलो नेक्स्ट करो. and the options. So specific area of water is given and latent heat of ice is given. 100 grams of ice at 0 degrees Celsius is placed in 200 grams of water. I took ice, 100 grams of ice, and I put in water this much. The amount of ice that melt as the temperature of the water reaches at 0 degrees Celsius too close to. So what is C of ice and C of water? C of water to the other things, right? Specific heat capacity of water is given, right? And as ice also given. Latent heat is given, right? Why C of uska? See, question should write ice में पानी में डालने से कितना? See, whether it is compulsory that whether complete ice should be melted? No. So आपको कितना हीट दिया तो कितना आइस मेल्ट होगा, बेस्ड ऑन दैट ओनली इट विल बी देयर. सो बोला कितना मास मेल्ट होगा अप्रोक्सीमेटली, तो मास फाइंड करो. कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल यूज करो एंड सॉल्व. You can use calculator.
Calorimetry. Oh. Heat lost by a water is equal to heat gained by the ice. कैल कैलकुलेटर यूज करके आपको आदत आदत है ना पूरा ऑलवेज. क्वेश्चन आंसर कृष्णा. So I got 61.7 in grams, yeah. So I got 64. Wait, no. Okay. 61. ओके देखेंगे. करो कृष्णा, ये लोग ऐसे करेंगे. करो फर्स्ट उसको आप करो. सी वो पानी कितना, ये हॉट बॉडी है ना, ये कितना लूज करेगा, ये कितना गेन करेगा, ये कितना गेन करेगा टू कन्वर्ट इनटू वाटर ml यूज करो. Sir, दोनों how mc would डेल्टा टी you, इक्वल. sir, how would you do that without specific heat of ice? क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो पूरा. Specific heat of water is वाटर इज गिवन. 4200. अब हाँ. आइस को क्यों चाहिए, आइस को क्यों चाहिए? वी Sir, आर यूजिंग because कैलोरीमेट्री. दो बॉडीज वी आर मिक्सिंग. देखो दो yes, बॉडीज वी आर sir, मिक्सिंग. विच इज हॉट बॉडी, विच इज कोल्ड बॉडी? टेल में. hot body is water, cold body is वाटर. ice. ओके. एंड ये अभी अमाउंट ऑफ आइस दैट इज मेल्टेड, ओनली जो मेल्ट हुआ दैट आई दैट ओनली दैट एनर्जी वी आर यूजिंग राइट. सो Hmm. इसमें mc डेल्टा टी यूज करो. ओके पानी कितना रहने का? 0 डिग्री राइट. 0 डिग्री में कितना, मतलब कितना तक रहेगा, कितना में आइस मेल्ट होगा बोल के पूछ रहे हैं राइट. mc डेल्टा टी इज इक्वल टू ml. वो कितना मेल्ट होगा? आइस 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट होकर क्या आएगा? पानी. अगर 0 डिग्री सेल्सियस में पानी आएगा ना उधर तक ओनली आई वांट, आई डोंट नो दैट वन. सो mc डेल्टा टी इक्वल टू ml यूज करो. सो L इज गिवन ऑलरेडी, लेटेंट हीट ऑफ आइस इज गिवन, दैट वन यूज करो. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस जरूरत नहीं है. सो यूज दिस वन Sir, then we'll mc find T, right? ml. So we have to find m, mass of ice that is melted I want. Oh, See, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? आइस का 100 ग्राम्स दिया है, बट वेदर ऑल हीट एनर्जी विल मेल्ट द आइस, नो, नॉट गारंटीड. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे ऐसे में कंफ्यूज होगा. सो जो मेल्ट हुआ है दैट मच ओनली. सो आंसर इज 61.7 इज ग्राम्स इज आंसर. सो इतना आउट ऑफ 100 ग्राम्स में इतना आइस ओनली मेल्ट होगा. वो दैट इज इंपॉर्टेंट. ये बार बार क्वेश्चन ऐसा मॉडल में पूछ रहे हैं पूरा. नेक्स्ट करेगा, करो. हाँ करो. Same type of model. Ice at minus 20 degrees Celsius is added to 50 grams of water at this much. When the temperature of the mixture reaches 0 degrees Celsius, it is found that 20 grams of ice is still unmelted. 20 grams of ice is unmelted बोल के दे दिया. The amount of ice added to the water. कितना ऐड किया होगा ice is asking. So a specific heat capacity of ice also given to you. Now heat of fusion.
at 0 degrees Celsius. मतलब latent heat of fusion is given. L also given here. Amount of ice added to the water. Here कौन सा ice? Melted वाला ice नहीं, total ice. Total ice added वाला पूछ रहे हैं. Because melted वाला already दे दिया ना आपको. So initially total ice मान लो x grams. Find x. Sir, in Hmm. like the previous question, when we're taking MC delta T, C we take it for water. Water on. Okay. So here also calorimetry principle use करो. Sir, delta T also we take it for water only, no? Delta T from initial water का water के लेने का. मानो क्वेश्चन शुदा. Yeah. Initially total amount of ice x grams ले लो. Use the principle of calorimetry. Heat lost by hot body is equal to heat gained by cold body. So what I did was first I found the Q of water. I got that as 8,400, and then I found the ice part, that is M into again MC delta T. I got that as 42 in the into mass of ice, and then I equated the Q of Sir, ice can as I use into, calculator? This is JEE question. क्या करेंगे? बोल दिया It's तो. complicated, sir. so then I वो- equated the heat of water and heat of ice, हाँ. and then I got everything in terms of mass. देखो Not- डेल्टा क्यू यू फाउंड ऑलरेडी एमसी डेल्टा टी यूज करके फॉर वाटर का. ओके दैट इक्वेट करो इज इक्वल टू आइस इनिशियली -20 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा 0 डिग्री में कन्वर्ट होगा. सो दैट इज एमसी डेल्टा टी प्लस जो अगेन 0 डिग्री से 0 डिग्री ऑफ आइस कन्वर्ट होने के बाद 0 डिग्री से वाटर एट 0 डिग्री में कन्वर्ट होगा. सो हियर वी हैव टू यूज एमएल. Sir, नाउ 100 सॉल्व. grams. 100 grams. 100 grams नो. Now use karo here to find the value of x. So mass of so here m will be cancelled, right? All m is cancelled and use करो इसका कितना होगा. mc डेल्टा टी कितना होगा? mc डेल्टा टी आइस ये वाला कौन सा आइस यूज करेगा? ml वाला कौन सा आइस है? टेल में जो हीट एब्जॉर्ब करेगा वो आइस है. बट ये अनमेल्टेड है ना, इसको नहीं लेने का. सो इसमें क्या करेंगे? x -20 को निकाल के एल डालेगा. समझ? इस पर आइस का इज इक्वल टू एमसी डेल्टा टी. दिस इज वाटर का. अंडरस्टूड? सी आइस का -20 डिग्री सेल्सियस इनिशियली, इसको मैं हीट दिया. सो -20 से 0 डिग्री बनेगा. सो एमसी डेल्टा टी आई एम यूजिंग फॉर दिस वन. And ice at 0 degree Celsius is converted to water at 0 degree Celsius because final temperature कितना है? 0 degree Celsius पानी में. So that's why I use ml. But ml कौन सा यूज करने का पड़ेगा? इसमें अनमेल्टेड है ना, वो निकाल देने का, अनमेल्टेड वाला. So जो हीट ले रहे ना that one, because
अगर ये भी लिया तो हीट ये भी मेल्ट होगा, ये नहीं ले रहे हीट, दैट्स व्हाई ml we have to use x minus total ice minus 20 निकाल के उसका देने का. Now equate, now substitute the values and find the value of x, आ जाएगा एक ही स्टेप में. करो. Sir, is the answer 50? ऑल बोलेगा ऑप्शंस. So if I use this, if I use calculator, हाँ कितना? Tell I me. got 40. हाँ 40 is the answer. Abba. सो जेई में क्वेश्चन तो थिंकिंग क्वेश्चन है, एंड पेपर कैसा रहेगा आपको कभी भी पूरा हार्ड नहीं रहेगा, इजी मीडियम हार्ड, ऑलवेज इट विल गो लाइक दिस. इजी वाइज में दे विल गिव नियरली 10 to 12 क्वेश्चंस विल बी इजी ओनली. तो हार्ड वाला 3 to 4 क्वेश्चंस विल बी हार्ड एंड मीडियम वाला रिमेनिंग क्वेश्चंस. concept understood Krishna? These all questions, if you do all the PYQs, then only you will understand. Until unless you cannot do the PYQs, only नाम के वैसे तो नाम एक बुक करेगा वो बुक करेगा बोल तो नहीं आएगा. Sincerely करो. We have nearly 25 questions are there for only for calorimetry का. 25 questions. If you don't 25 questions, then class everything will be done.